Hello students, welcome back to your channel Gyan Manju Online Education. I hope you all are fine and safe at your home. So students, from today onwards we are going to start our first unit from our supplementary book. So the main chapter, the main unit, you have your textbook, so open it. So first let's see the little bit introduction of our supplementary book. So our annual learning plan we have, so in part 1 we have total 4 units. So units are divided into the part of the piece of the writing, means for example whether it is fiction, it is non-fiction, poetry, short stories, etc and etc. तो हमारा जो मेन टेक्स्ट बुक है, वो टेक्स्ट बुक हनी ड्यू जो है उसके इंडेक्स में अगर आप देखेंगे तो बहुत ऐसे यूनिट्स है. पोएट्री है तो जो जो फिक्शन है वो फिक्शन वाला यूनिट में डिवाइड होगा, जो नॉन फिक्शन है वो नॉन फिक्शन वाला, और जो पोएट्री है वो पोएट्री, और शॉर्ट स्टोरीज है वो शॉर्ट स्टोरीज में डिवाइड होगी. तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्म ऑफ द लिटरेचर दिस सप्लीमेंट्री बुक इज डिवाइडेड. ओके, तो फॉर एग्जांपल इफ फर्स्ट वन इज फर्स्ट यूनिट, अगर वो फिक्शन है तो उसमें जो कुछ भी हमारा टेक्स्ट बुक है ये हनी ड्यू, उसमें से जो कुछ भी फिक्शन है वो फर्स्ट यूनिट में आएगा. अगर नॉन फिक्शन है तो जो कुछ भी नॉन फिक्शन है वो हम लोग कवर करेंगे. ओके, सो लेट्स सी fiction non-fiction. I know that is the part of your bridge course, but let's go with revision portion. So what do this image show? Daily newspaper hai and Alice's adventures in Wonderland. So it's all about a book and a newspaper. So let's see what is the difference. Which of these are about people, event or things that seem unreal? Which of these are, इसमें से कौन ऐसी चीज है कि जो लोगों के बारे में, इवेंट्स के बारे में, या फिर ऐसी चीज के बारे में है कि जो कुछ अनरियल है, मतलब कि रियल नहीं है. तो हमें पता है कि इफ वी टॉक अबाउट द न्यूज़पेपर, सो न्यूज़पेपर्स आर द रियल थिंग्स, बट इफ वी टॉक अबाउट अ बुक, so it seems like an unreal book. It's all about the imagination. So here we have the highlighted one, that is a book. So here we can see this book is unreal thing, मतलब कि जो कुछ भी इसमें कैरेक्टर से, जो कुछ भी इवेंट से कुछ चीजें बन रही है, वो सारी थिंग्स, सारे इवेंट्स और पीपल जो है वो अनरियल है. Now, which of these are about facts and real people, events or things? So it's all about the newspaper. Yeah, here we have the answer. So what is fiction? The category of text which are created from the author's imagination is called fiction. Fiction क्या है? तो ये एक कैटेगरी है. द कैटेगरी और टेक्स्ट और मूवीज हम लोग कह सकते हैं. टेक्स्ट मतलब कि कुछ भी नॉवेल्स वगैरह हम लोग रीड करते हैं वो, और मूवीज भी ऐसी आती है. सो ऐसी कैटेगरी टेक्स्ट की या फिर मूवीज की कि जिसमें विच आर क्रिएटेड फ्रॉम द ऑथर्स इमेजिनेशन, कि जो राइटर या फिर ऑथर के इमेजिनेशन से जो कुछ भी क्रिएट होता है वो है हमारा फिक्शन. So in fiction there is no space for real events. Okay, so it's all about the fiction. They are written to entertain readers. Mystery, romance, fantasy, crime, thrillers and similar categories come under fiction. तो fiction में क्या क्या आता है और क्यों लिखा जाता है? ऑथर अपने इमेजिनेशन से अपने थॉट्स को रिप्रेजेंट करते हैं बाय राइटिंग दिस फिक्शन. तो उसमें मिस्ट्री आती है, रोमांस आता है, फैंटेसी, क्राइम, थ्रिलर और ऐसी कई कैटेगरीज इसकी सिमिलर जो होती है वो सारी आती है फिक्शन. सो इट्स ऑल अबाउट द इमेजिनेशन ऑफ ऑथर. Then what is non-fiction? The category of text or movies which are based on facts and real events or people is called non-fiction. कि जो सही, मतलब कि जो रियल लाइफ में कुछ
एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्टेंस है वो लोगों का, वो इवेंट का, वो जो कुछ भी है, दैट इज कॉल्ड नॉन फिक्शन. दे आर रिटन टू टीच और इन्फॉर्म रीडर्स अबाउट वेरियस टॉपिक्स. अगर न्यूज़पेपर, इफ वी रीड इन द न्यूज़पेपर, so many columns are there, various, very variety of columns are there. Variety means a kind of, so we can see the variation of the column. If you have read the newspaper anytime, so the health tips are there, a kind of information are provided about the animals, fishes, or any disease. So why they write this kind of all the things? Because it's all about, they want to share their thoughts. Means कैसे थॉट्स कि जो सही है, जो फैक्ट है, वही न्यूज़पेपर में छपता है. पर अभी हम लोग देखते हैं कई कई बार कोई फेक न्यूज़ भी होती है. सो दैट इज एक्सेप्टेंस. Newspapers, stories about real people, cooking, health, travel, religion, history, etc. are all non-fiction. तो non-fiction में ये सारे आते हैं. न्यूज़पेपर्स आते हैं, स्टोरीज, पर कैसे स्टोरीज? जो रियल लोगों के बारे में स्टोरीज होती है वो. फिर कुकिंग, हेल्थ, ट्रैवल, रिलीजन, हिस्ट्री, ये सब क्या है? ये हमारा है नॉन फिक्शन, कि जो फैक्ट है, कोई इमेजिनेशन नहीं है, कोई फैंटेसी नहीं है, या फिर कोई बना कुड़ा के कोई स्टोरी बनाई नहीं है, तो वो हुआ हमारा नॉन फिक्शन. सो यू हैव टू थिंक अबाउट दिस हैरी पॉटर. हैरी पॉटर रियल में कोई कैरेक्टर है या फिर नहीं है? नहीं है. तो ये हुआ हमारा फिक्शन. फिर हुई ये हिस्ट्री. सो हिस्ट्री, व्हाट इज दिस हिस्ट्री? वेदर इट इज फिक्शन और नॉन फिक्शन? यस, दैट इज नॉन फिक्शन. कुकबुक, दैट इज आल्सो नॉन फिक्शन. देन एवेंजर्स, ये सीरीज तो आपने आई थिंक देखी होगी. या एवेंजर्स एंड गेम, इट्स ऑल अबाउट द इमेजिनेशन, सो दैट इज फिक्शन, राइट? कहीं में ये थॉर वाला कोई कैरेक्टर रियल में एग्जिस्ट करता है? नहीं करता है. सो इट्स ऑल अबाउट द फिक्शन. सो इन दिस यूनिट विल फोकस ऑन रीडिंग नॉन फिक्शन. नॉन फिक्शन मतलब कि यहाँ पे जो आप लोग कैरेक्टर्स देख रहे हैं वो रियल पीपल है. फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों जो है वो अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छे से खेल रहे थे. कोई अच्छा साइंटिस्ट था, कोई अच्छा प्लेयर था. So in this unit, the first unit, that will be our non-fiction. Okay, students, so let's get started. Our first unit in supplementary book, non-fiction. Okay, so let's move further. So students, here we have the vocabulary words, means about what characters we will see. So who's he? Which sport does he play? Do you know any of his achievements? Let's see. This is Leander Paes. He plays tennis. Paes has won 8 doubles and 10 mixed doubles Grand Slam titles. तो कितने टाइटल्स उसने जीते हैं वो यहाँ पे है. टेनिस प्लेयर है. He holds a career Grand Slam in men's doubles and mixed doubles, and he has also achieved the rare men's doubles mixed doubles double at the 1999 Wimbledon tournament. So before we read Leander Paes' biography, let's have a look at some words or phrases that we will come across. So here clinched means, that is the verb. ed form यहाँ पे लगा हुआ है. So what is the meaning of that? Succeed in winning or achieving something, तो उसे clinch बोलते हैं. He battled really well and clinched the victory for India. Then triumph, तो वो है हमारा नाम. A great win or victory, that is called triumph. The tournament ended in triumph for the home team. Creditable, that is adjective. So यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि कौन सा वर्ड क्या है, नाउन है, फ्रेज है, एडजेक्टिव है, या फिर एडवर्ब है, वो यहाँ पे डिस्क्राइब किया है.
So that is deserving praise and approval. Despite a creditable performance, Sam didn't win first place at the competition. Under one's belt. So that is our phrase. Satisfactory, achieved, or experienced. Now that he has a few wins under his belt, मतलब कि satisfactorily achieved, उसने अच्छी तरह से अचीव किया या फिर उसने एक्सपीरियंस भी satisfactory किया. Under his belt, he will be more confident in his tournament. Okay? तो आपको ये जो वर्ड और फ्रेजेस है वो आपकी नोटबुक में लिखना है, और पहले जो फिक्शन नॉन फिक्शन उसकी जो डेफिनेशन थी वो भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है. ओके, so students, here we have a video regarding this dictionary, how to use it, so let's watch it. How to use a dictionary. Big day today. People will exercise their right to vote. Mama, what does the word exercise mean? Let's check the dictionary to find out. But what is a dictionary? A dictionary is a book that lists all the words of a language and tells us what they mean. This dictionary has so many words. How will I ever find the word I want? Don't worry, Aryan. I will show you how to use a dictionary. All the words in a dictionary are arranged in alphabetical order. Where do you think you will find the word vote? I think the word vote should be in the last few pages. Well done! How did you guess that? Since the words are in alphabetical order, words starting with V should be towards the end. Excellent! Let me give you a special tip. Every page in the dictionary has guide words. Guide words are the first and the last word on every page. On this page, these are the guide words. Now, if someone asks you for the meaning of the word exercise, how will you look for it in the dictionary? I'm not sure. Okay, first you need to identify the first letter of the word. In exercise, the first letter is E. Let's try to find a page in the dictionary with words that start with E. Now, let's match the second letter of exercise, which is X, with the guide word. If it does not match, look at the pages before or after the one you just went through based on alphabetical order. Stop when you find a page with guide words beginning with E, X. Now, look for the word exercise on this page. If you still can't find it, look at the pages that come before or after the current one to locate the word. I found the word exercise. Well done. Now tell me what's written next to it. I'm not sure. It's the part of speech the word belongs to. Oh, that's so useful. And look, the word exercise has more than one meaning. In that case, to avoid confusion, follow these 4 steps. Step 1. Read the sentence. Step 2. Identify which part of speech the word belongs to. Step 3. Under that part of speech, look at the different meanings given. Step 4. Read the sentence keeping in mind each of these meanings and see which of them makes the most sense. As we don't know which meaning for exercise suits this sentence, let's try out these 4 steps. Aryan, let's read this sentence together.
People will exercise their right to vote. In this sentence, to exercise their right means to do something, which in this case is vote. So here, exercise is a verb. In the dictionary, there are three different meanings for this word when it is used as a verb. And they are use or apply power or right, do physical exercise, worry or puzzle someone. From these three meanings, use or apply a power or right fits our sentence the best. Yes, this meaning fits perfectly. Now I know how and when to use a dictionary. Thank you, Mama. So students, it was all about how to use dictionary with the help of dictionary. If we don't have dictionary, then have a pocket dictionary. So with the help of that dictionary, if you find any difficult word that you don't know the meaning, right now Google is there, but you must know that how to use this dictionary. बहुत अच्छा लगता है, फनी वे है ये वर्ड्स यूज करना, वर्ड्स कैसे फाइंड आउट करना। बहुत हमें एक वर्ड अगर हम लोग फाइंड आउट करते हो तो उसके बदले हमें दो तीन ज़्यादा वर्ड्स मालूम पड़ते हैं। सो जस्ट यूज डिक्शनरी मोर। Okay, so here we are going to end up our today's lecture. So whatever I have told you, to do your homework and send it to me online. Okay students, have a great day.